Okay, so last time we focused on what is data, right? And we kind of also looked at some files which has a text data compared to your binary data. So text and binary we spoke about, and so let's continue with this now. Yeah, we maximize this. So data type. So last time we spoke about data types, like text is a data type, binary is also a data type, and number is a data type. So but underlying, though these are different data types, underlying all the data is stored as in the digital format, that is 0 or 1, using a number 0 or 1. So that is something that you have to be aware. And depending on the data type, like if it's a text data, the number of bytes that is used to store any data. So 1 byte takes around 8 bits. So a character, a simple character A might take 8 bits to be stored inside your computer. But whereas if it is a number, just a number 0 or 1, like say true or false, true or false can be represented as a 0 or a 1 bit, so it can take only 1 bit. So how many bits is used to store the data, it depends on the type of the data, so you need to be aware about that. So as I told you, everything in the digital computer, no matter what you see on the screen, like text data, binary, whatever data, binary data of course is is underlying format is binary, but the text is also converted to binary, number is also converted to binary. So but we don't understand binary numbers, right? So in that digital world there are only two numbers, 0 or 1, so we say the base is 2. We operate in the decimal world because we operate with the numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 10 numbers we use to express our numbers. So that is since there are 10 numbers, the base is 10, and that is what we use. That is what we learn in our school. But in computers, everything is operated not on. Computer do not understand decimal numbers. Those decimal numbers have to be converted to your binary number, which is in terms of zeros and ones. So every decimal number has some binary number equivalent. And then there you will come across hexadecimal. So in hexadecimal, what happens when the numbers are too big? Then we want to kind of display it in a short format. So that is why they use a 16 base 16 numbering system, which starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then from 10 onwards until 16. So 10 is your A, B is 11, C is your so 10, 11, 12, 13, 14, 15. So F is 15. So somebody is saying the hexadecimal of F means so let me also start a paintbrush. So these are the basics. Of course I'm just repeating it because if you don't understand all this, then you will have problem with data. So anytime somebody wants to represent a hexadecimal, they'll type 0 and X. Okay, so 0 and X means whatever number you're showing up is going to be a hexadecimal number. So 0xf is equal to what number? You tell me. Just now I told you, no? It is number what? Hello? 15. 15. Okay, good. So just like A is number 10, F is number 15. So these are the basics you need to be aware about. Okay, so if you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and let's say we are typing 10, 11, 12, 13, 14, 15. So this is your decimal number, right? In the same way, if you are typing your hexadecimal number, it would be
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E and F. So this is your hexadecimal equivalent. The first is your decimal equivalent, and because remember in computers we don't actually deal with decimal or even hexadecimal, we deal with binary numbers. So whatever numbers you are having, you have to convert it into, the computer has to convert it into binary. So binary, 0 is a 0, right? 1 is a 1, and a 2 is a 1 0, a 3 is a 1 1, and so this is when we say 0 0, it also means 0. So the thing is, the 0 and 1 can be represented using 1 bit, but 2 and 3 requires 2 bits. 1 0 means 2, 1 1 is 3, so 4 would be 3 bits. Then 5 would be 101, 6 would be 1, how much it is, 1 1 0, 7 is 1 1 1, 8 is 1 0 0 0, so 4 bits. So 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 1 0 1 1, 1 1 0 0, even I can make mistakes. So 0 1 1 1 1 0 and 1 1 1 1. So you see that if you have to just display 0 and 1s, then 1 bit is enough. But if you want to convert 2, like the computer has to be told this is number 2, you have to send 2 bits at least. But if you want to send the number 4 to the computer, you have to send at least 3 bits. And if you have to send number 15, you have to send at least 4 bits. So 1 1 1 1 is 4 bits. So these are the representations in the decimal, hexadecimal and binary. So everything that you see on the screen, whether whatever you see on the text, images or maps or anything, everything is converted into binary. Your computer, first of all, it works with binary data. Everything has to be converted to binary data, and to perform any action, let's say you want to search for a particular data, compare a particular data, sort a particular data, it works with the help of binary operations. I mean, just like in mathematics we have addition, subtraction, multiplication, division, you can do the same thing in binary. So how does a computer do binary operation? It uses electronic circuits. So these are called digital circuits, which is made up of electronic parts. So using electronic parts, like your calculator is your electronic part, right? You are actually calculating 1 plus 2 on the screen, but internally those electronic circuits are being used. So at the bottom, you will use transistors and resistors and etc. A combination, a circuit. So what is a 0 and 1 in an electronic circuit? So 0 means 5 volts. Sorry, 0 means 0 volt on a particular pin, and 1 would mean 5 volts. So if there is a 5 volt signal on a particular pin, so I hope you will understand pins or any circuit. It will, we may have, for example, this diagram, some circuit is there like this. So here you are putting some voltage from behind, you are plugging it in, right? So you are giving 5 volts to it. So when you give 5 volts to it, it is quite possible this fellow gets activated, this fellow becomes 5 volts. So 5 volts would be 1, and maybe there is no signal because of this circuit. Let's say there is no signal on this pin, so it will be 0, it will be 0 volt and it will be 0. So in term, ultimately your binary numbers are getting converted to your voltage signals. Based on that voltage, the computer knows this is a 1 or this is a 0. So you need to understand how computers are working using binary data.
So for example, when we have to display a binary address, right, sorry, IP address is like you can show as a combination of decimal numbers, something like this. This can run from 0 to 255. The second number can run from 0 to 255, third number and fourth number. So 0 to 255 means the maximum number. How many numbers we are totally having? 256 numbers, because we are starting from 0, that's why we are ending on 255. So if we say 0 and 1, actually there are two numbers, right? 0 is one number and 1 is another second number. So because we are starting from 0, the maximum number is possible with with this is 255, which is actually 8 bits, and 8 bits in hexadecimal would take at least each hexadecimal value will take maximum 4 bits, as we told, right? Oh yeah, the F is taking maximum 4 bits. So when you say FF means 8 bits will be there, and FF is same as 1111, like there are 8 ones over here. So if you have to this decimal number from 255 or 255 or 255 or 255 is like 8 bits plus 8 bits plus 8 bits plus 8 bits, that is 32 bits. So 32 bit is used to represent an IP address, to tell which computer, what is the name number of the computer, that is your like an IP address. So IPv4 is like 16 bits. So 4444, sorry, it is not 32, it is 8. What am I doing? This is like FF. Yeah, this is one extra FF over here. So yeah, so 32 bits, and so this is not 16, this is 32 over here. Okay, this is one mistake, I feel. And this should be 64 then. IPv6. So basically with 64 bits means you can represent many more addresses or many more numbers. So since computers have increased the numbering system, numbers were not enough to represent the number of computers. So every computer required a unique address, and that is where your networking address technique comes into use. So as I told you, this is like an electronic circuit, and if you see, this is an adder circuit, means you are doing an addition in the circuit over here. So here on the left hand side, you're sending a voltage signal A, B and C. C means like a carry number, right? So like when we add 9 plus 8, it is like 17, right? So 7 is we put a number 7 and then we carry 1 to the next addition. So that is a carry number. That is what the C means. So but essentially we are adding A plus B plus a carry also, and this is what the circuit. And then you see some electronic circuits over here. So I think this is an OR circuit. So this is an AND circuit, like we are putting two signals on the left hand side, 1 and 1, and then it will give you a certain output. If you are giving 0 0 as input, you will get a 0 as an output. So on this right hand side, you see the actual it is using some kind of a transistor or a diode, and there is some resistor and there is some voltage given over here, and then you can this is a simple AND gate. AND gate means if you are giving a signal of 0 and 0 over here, output will be 0 over here, no signal. And the same way, if you are giving a signal of 1 1, means 1 and 1 is equal to 1, 1 and 0 is equal to 0, means if any one is 0, then output is 0. So using these logic circuits also, you can you can create circuits that adds and subtracts everything. So logic gates are used to perform various mathematical operations, including comparing a value. So when we are comparing, actually what we are comparing, we are doing binary comparison. Okay, when we are doing 10 is 10 equal to 10, where actually the computer is converting the the left hand side also 10 to some number. So if you want to compare 10 is equal to 11, so 10 will be converted to some binary equivalent, 11 also will be converted to some binary equivalent, and then a comparison electronic circuit will compare whether this number is same as the other number. So when we are comparing to text also, like we are testing is ABC equal to DEF, actually every character has to be converted into some number, and those numbers are ultimately compared underlying inside the computer. So broadly speaking, in database we are looking at three types of data: text, number
and date, right, which this is something that is readable data, you can say. So date is like you will have a format of dd mm yy followed by the time, so the timestamp, that is 2 o'clock or 2 a.m. or something like that. So as I told you, whatever characters we are typing or seeing in the computer. So let's say there is a monitor over here, and then we have a keyboard over here, right? So when on this keyboard there is a key which is called A over here. That is how a keyboard is, A over here. And when we press A, we see A over here. So how does the the screen knows that what you have typed? So what is happening is, whenever the keyboard knows what is the number A is actually equal to number 65, and number 65 is you may represent it in some binary format, 100 something like that. So that number, this binary bits, is actually passed on to the computer or to the processor or to the operating system, whoever is actually going to display. So definitely in between, your OS is playing like a coordinator. So you give it to the OS and says, oh, the OS is you want to type A, okay, what is the number? You have typed A, but what is the signal going? 01111 something, or number 65, and that moment operating system sees the number 65 in terms of binary value, it uses that binary value and gives it to the to the screen driver or the display driver. The display driver knows that if you give me a number 16 like this, something, then I will display A. So that conversion, underlying binary conversion, is happening, and that's how your character A is displayed in terms of using some pixel formation or some whatever technology like CRT technology or desktop technology or screens, whatever they use to ultimately display the actual character. But you have to tell the display driver has to be told that it is this number that I want to print. So you're not telling the character A has to be printed, you're telling this number has to be printed. So everything is communicated in terms of numbers, which is binary number. So in your computer, there is, we use a ASCII chart, so which number represents which character. So so number A is like 65, but a small a is not the big A is not having the same number as small a, so it is different for the computer. So this is a separate number. So let us see if we can so this is an ASCII chart over here, and on the left hand side you see a decimal value, the hexadecimal, the octal value. So octal value we can just forget about it for now. But if you see number 65, what is number 65? This number 65, if you go on the right hand side, it is character A. Number 64 is this @ sign. And what is small a? Small a is number is 97. So if you want to print small a, you have to send 97 number in the binary format. So 97 in decimal is same as 61 in hexadecimal. So you need to know how to convert. If you have to find out what is a binary equivalent, you should know how to do this. Let me see, I don't know whether I'll some of the important things that you have to know is some of these are readable characters, but not everything is a readable character. For example, there is you see the number 27 is a escape character. So different there are non readable characters, and whenever you're pressing an enter key inside your computer, actually you're actually creating one character. That character cannot be seen, right? So for example, when I'm typing something and I press enter, I've gone on the next line. Now you cannot see that last character over here, but the paintbrush knows that you have typed an enter key, and that enter key will have a value over here. So
So you can say our keyboard, usual keyboard is based on ASCII characters because it is representing an ASCII chart, in a way. So example 65 number would mean A. When we click A, it sends the number 65 to the program to indicate A was clicked. When screen has to display A, it has to be told that the number of the character to be displayed. So just like the screen has to be told what number has to be displayed, the database also, though we see the database in text format, it is underlyingly it is showing a binary number of that character. So it has to be told which number do you want me to store. If you are storing ABC, then you have to give me the number value for A, B and C, and that is how I will know this is the numbers. And so what we are storing is binary numbers inside the database. So I hope you all understand this difference. So the ASCII chart, so initially when computers came, they were using ASCII charts, which which had 256 characters. And but later the problem happened because there are so many languages in the world with different character set, right? We are not only using English, we are having Chinese, we are different character set. We are having in India we have so many languages, and we are using Devanagari, right? So Devanagari is A, I, K, 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 something, means it has got a different so many characters. So in order to so how do you represent those characters on the computer? It was very difficult in the earlier days, but then they came up with a new character set called Unicode. So Unicode characters, they cover around a lot of languages, around 165 languages of the world they cover. So that means if you are displaying something in Unicode, the computer so whenever you are telling a computer that I want to display a character, or whenever you are telling a database I want to store a character, you have to tell how this is encoded, in what format. Is it ASCII or is it Unicode? Because if it is Unicode, then Unicode will have his own chart. In this character this number, as ASCII will have his own chart, this character this number, So now in ASCII, if there are 256 characters, the 256 characters, in order to display 256 characters you require 256 numbers, and to display to have 256 numbers you would need minimum 8 bits. So if you have 8 bits, so what I mean is eight bits is 11111111. This number is 255. So you can start from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is also equal to 0 only, and right up till 111. So 0 to 255 can represent is different numbers representing different character as per the ASCII charts. So to store a ASCII character as per the ASCII character chart, you will require at least 8 bits over here. So if you tell the database I'm storing in ASCII encoding format, and we are storing A, B and C, we are storing a string. So what actually, how many bits are actually being stored? It is one character is 8 bits, means 8 bits plus 8 bits plus 8 bits is equal to 24 bits will be used to store ABC. So you have to remember this. So the database, the storage, what is the data size will depend on your data type. As I told you, if it is a Boolean field, Boolean field is like it's just 0 and 1. I may just use 0 or 1. So I may just use 1 bit to store in the database. But if you are storing a string, one character takes 8 bits. So if there are 3, if there are 3 characters in a string, it will take 24 bits, and that's the size will depend on your length of your string or something. And if it is a number 1, the number 1. So the string the string 1 has a different value than the number 1. Okay, so the number 1 is, it just requires 1 bit to represent, which is number bit 1.
but a character 1 requires 8 bits. And what is that character? Let's see the chart. Do we have a chart for number 1? So you see number, so tell me by reading this chart which number is represents number 1 from the chart. Priscilla? Hello? Can you hear me? Hello? Oh, Priscilla is not there. So, Saili, can you tell me which number represents number 1 in the computer? Sir, 1. Yeah, the character 1 is which ASCII code? What is the numerical value of number 1 in the computer as per ASCII chart? So if you want to display character 1 or character 2, what numerical value, ASCII numerical value you have to, what is the equivalent numerical value, ASCII numerical value? Prajakta? So 49. बराबर है. So if you are sending a character A, you have to tell the computer I am sending. You have to send 49 number to the computer or to the database. But if you are sending the number 1, then 1 bit is enough, or 2 bits is depending on the number that you are talking about. If it is like number 7, then only 3 bits are required. If you are talking about number 15, then only 4 bits are required. To store to store something like a string 12 will take 8 bits plus 8 bits, because there are, each character is taking 8 bits, right? So if you are storing a string 12, it will take 16 bits. But if you are storing the number 12, how many bits it will take minimum? Sarah, how many bits will be taken to store the number 12, minimum number of bits? आगे कोणाला पाहिजे ते. Can you hear me? Rajata, you know how many bits will be required to store the number 12? We just now saw the chart, no? 3 bits will be required, right? At least 3 bits will be required. So Yes. it will be required. So if there is a string operation, it will be much slower when you're comparing a string. When you're comparing a number in the database, it will be a little faster because the bits are lesser over there. So so it is very natural. Electronic circuits are naturally attuned to the numbers rather than strings. So when you're doing string operation like comparing is ABC equal to ABC, it has to be converted in the number format, and then those numbers have to be converted, and the amount of data that data bits that is used to store in that particular data, it depends whether you're storing a string or whether you're storing a number. And if you're like, say, if you have an image over here, there's a red color dot over here, okay, so on the screen. So if the number of colors, if you want to display like 250, its dot is too small.
So there is a dot, red dot over here. So let's say you want to the screen consists of basically is a combination of many dots, right? And each dot is some color, and each color is also some number. So you need to remember that. So if you say my colors are represented using numbers from 0 to 255, the red color will be some number over there. Okay. So with this 0 to 255, I can store only 256 colors. But you may want some colors or some combinations to be stored, just like you don't want to restrict to English language but also some other languages. You have to extend the character set from ASCII to Unicode. In the same way, in the color scheme also, if you want to represent more colors, you require more numbers, and the more the numbers are used to represent each dot or each character, whatever the numbers, whatever number is used to represent, and what is the total, what is the maximum you can represent it, that will increase the size of your data also. So if it is only 256 colors, that means I will require how many bits? I will require 2. I think it will be 8 bits, right? So I will require at least 8 bits to store one dot inside your because you have to tell the image, if there is image, there is a red dot, there is a blue dot, every dot is some number between 0 to 255, means one red dot changes to the binary equivalent will be some 8-bit number. So if this is a 1000 bit image, then 1000 pixel image, so 1 pixel is 1 dot, right? So that means 1000 dots will be how many bits into 8 bits, which will be like 8000 bits, which is equal to 8 kilobytes. So to store a single image takes a lot more data compared to storing a string. Image is complex, is a bigger set of data set, and it requires more bits to be stored. And this is the reason, because it depending on the number of colors, the numbers that you are using to represent a color, because that the computers have to be told which color to display, then you have to tell which number to display. So I hope you all understand this, and this is not getting complex. So in the extended ASCII codes, you see there are some special characters over here, which also you can type. These are also readable characters. So any questions so far? Hello, any questions? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. So if you see on this is a Unicode chart code, and you see there is a this 0900 is actually a hexadecimal number. It is not your decimal number. You see this chart is running from 0900 to 097F. Each hexadecimal number will take at least 4 bits. Okay, so which means 097F is actually 4 bits into 4 characters, means 16 bits. So each character in this chart will take minimum 16 bits to be to be stored, or to be represented. So a normal ASCII
would take 8 bits, but if you are suddenly now increasing the total other characters also, you require more numbers to be represented, right? A bigger set. So 256 character set is not enough, and that's why we go with this 16 bit. With 16 bit you can have 2 power, since it is the base is 2, you can say 2 power 16 2 power 16 characters can be represented. So on the left hand side, what you're seeing is the Devanagari characters in Unicode. What is the number? So this would be 0900 would be this. So you see 0910 is A. Then what is the 0921? And on this right hand side is another character set. The numbers between the range of 3400 to 3439. CJK character set means East Asian, Chinese, Japanese, and Korean characters. So these are these characters are also there. So let us say I've not tried this, but let's try this. Okay, let's say I want to type this character D. It is 0921. How do we do that? Any idea? Let me try. So usually when you type a character A, I'm typing A now, so A gets typed, but I want to type actually D. So what do I do? So how do I do that? So let me see. I don't know. Not tried this. 0921 921 alt X. See, D has come, which means, so what I have done is I have typed the number, Unicode number value, then I pressed Alt key and X key. This will type that character. So since my Unicode number was 0921, then I followed with Alt plus X, this character gets printed this way. So in the same way, let's try some Chinese character, let's say 034A. Will this work? 34A. Is it 034A? No, it's 340A. 340A. I don't know whether this will work. Okay, yeah. So if I press if I type 340A followed with alt text, the Chinese character is getting printed over here. So this is happening because this word application, or this whatever this software is, it can understand Unicode character. If your software cannot understand Unicode character set, if it doesn't know what is 340A in Unicode, it will never be able to print that, because it has stored that Unicode character set with itself, and that is why it tries to match. Okay, so normally we just press one key to type a simple character, but when you're typing any character beyond the character set, you have to type this way. But and when, if you want to store this, this kind of character takes at least 16 bits to be stored in the database, right? So so this is like 340A means this is hexadecimal. So this is like 0x340A hexadecimal value. Each number is taking 4 bits. So this 4A is actually 10. Okay, so 340A is actually will take 16 bits. So when you're storing something in the database, you have to configure the database as to which character encoding you're going to use. Are you going to use ASCII or are you going to use Unicode? So in Unicode there are different types, which is like UTF-8 and UTF-16 and UTF-32, whatever, but the most that is used is UTF-8. Now why UTF-8
encoding was brought into place. It is used to save the data, the number of bits, or you can say to reduce the data size to store any character. For example, in Unicode, a character A, as I told you, would take ideally 16 bits as per Unicode standard, and in ASCII the number A would take 8 bits to be stored, the same character. Both the number values are 65 only, and I don't need to represent number 65. I don't require 16 bit. 8 bit is good enough for me. So but if you say the database is in Unicode format, then even if it is a single character A, it will occupy 16 bits, means it will take more size. Your database size will increase. So this is not an efficient way. If it is number A, then only 8 bits should be used. If it is a Chinese character, maybe I will use 16 bits, like 2 bytes, if some Chinese character is used. But if it is a English character, I just require 8 bits to be stored in the database. So let me type a string which has got English character as well as the Chinese character. So I'm typing English character number A, and then 03 which was 340A, all text. Right? Okay, I just X. So tell me if A is taking 8 bits, right? I just require 8 bits to store in a character A. The second character is Chinese character. This will take 16 bits, which means the total data size ideally should be 24 bits. But if you say Unicode, it will be like 16 bits plus 16 bits, and this will occupy the data size of 32 bits, and that will be, it's a waste of data size, because you're storing so much of data in the database. If every character is taking 16 bits, it will be a lot of data, the very big data size. So UTF-8, when you say the encoding is UTF-8, this magic works over here. Now that is what is the specialty of UTF-8. It is still Unicode, but what is the difference is the number of bits required to store any character. If you are storing an English character, it will occupy only that many bits, and if you are storing some character which requires 16 bits, then it will use 16 bits. It will not use, it will just use as much as it is required. Any questions so far? Are you all understanding? Is it something basic? Is it confusing? Are you understanding whatever I am explaining? Is it difficult to understand? Hello? Yes, it's a little bit difficult. Okay. I thought I was teaching the basic only, but what part you didn't understand, Sarah? What is confusing to you? I got this 8 bit 16 bits, but before ASCII characters and all, I don't understand that. ASCII means so maybe I'll explain in Hindi. Do you understand Hindi, Sarah? Are you comfortable with Hindi? Yes, sir. तो जब स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आए थे ना, तो वो कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था. वो कीबोर्ड भी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बनाया गया था. उस पर कोई भी ऐसे कैरेक्टर नहीं थे जो जैसे अगर कोई उर्दू टाइप कर रहा है तो वो उर्दू कैरेक्टर तो नहीं है ही नहीं कीबोर्ड पे. तो कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तैयार किया गया था. तो उसके लिए इंग्लिश कैरेक्टर्स में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एक A to कैपिटल Z हो सकता है, छोटा A to छोटा Z हो सकता है, और 0 to 9 हो सकता है. तो इतना कैरेक्टर्स को अगर हमें टाइप करना है
तो उसको कितना नंबर्स लगेंगे, तो हर एक को एक नंबर दिया गया है ना ASCII चार्ट में। मतलब अगर कैपिटल ए है तो उसका नंबर 65 है, तो ये 65 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट करते हैं कि हमें ये नंबर प्रिंट करना है, ये नंबर स्टोर करना है। ए का नंबर 65 है, वो कैसे पता चलेगा? वो अपने को लर्न करना पड़ेगा? नहीं, वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में वो इनबिल्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद जानता है कि मुझे ASCII चार्ट फॉलो करना है। वो खुद बोलता है कि जब ये कीबोर्ड पे ये बटन दबेगा तो मैं ए कैरेक्टर प्रिंट करूंगा, क्योंकि ये जब वो बटन दबेगा तो मैं वो बटन 65 का एक नंबर का एक बाइनरी वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा अच्छा 65 नंबर भेजा है, चलो मैं 65 नंबर प्रिंट करूंगा। और 61 नंबर होता क्या है? नंबर ए। तो आपको दिखता है ए, लेकिन वो कम्युनिकेट वो नंबर से होता है। तो जब कंप्यूटर शुरुआत में चालू हुआ था तो ASCII चार्ट बनाया गया था ताकि इजी हो जाए टाइप करने के लिए, क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड यूज़ करते थे ना तभी। तो वो कैसे समझेगा एक दूसरे को, मतलब प्रिंटर को कैसे समझेगा कैरेक्टर ए प्रिंट करना है, स्क्रीन को कैसे पता चलेगा कि कैरेक्टर ए प्रिंट करना है। इन द सेम वे डेटाबेस को कैसे पता चलेगा आपको कैरेक्टर ए स्टोर करना है। तो आप उसको बोल तो नहीं सकते हो ना ऐसा, चलो ए कैरेक्टर प्रिंट करो, उसको वो नहीं समझ में आता है, उसको नंबर समझ में आता है, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर 65 उसको आप बोलोगे तो उसको बोलेगा हाँ चलो ये हम ए स्टोर करना है। लेकिन ये चार्ट को, ये जो टोटल कैरेक्टर सेट है, इसमें टोटल एक्चुअली 0 से स्टार्ट होता है और 255 पे एंड होता है। तो 255 को अगर आपको 0 भेजना है तो एक बिट काफ़ी है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको नंबर 8 भेजना है तो 3 बिट्स काफ़ी है, 010 सॉरी इट विल बी 100। लेकिन अगर आपको नंबर 255 भेजना है तो आपको कम से कम 8 बिट्स का एक नंबर, बाइनरी नंबर भेजना पड़ेगा, बिकॉज आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आता है या वो मैं समझाना है तो फिर मैं वो समझा सकता हूँ। क्यों 255 8 बिट लेगा ऐसा, वो पार्ट समझा आपको? एक बार बताइए ना प्लीज। ओके, ये मैं थोड़ा नंबर 0 इन डेसिमल, जैसे मैंने बोला था बाइनरी में इसको कन्वर्ट करना है तो आइडियली पहले तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 0 इज 0 ऐसे। नाउ ये 1 इज एक्चुअली 1 ऑफ डेसिमल, जो हमारा रियल वर्ल्ड में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो बाइनरी में इसका वैल्यू 1 है, सॉरी पहला वाला 0 है, 1 नहीं है। 0 इज 0, 1 इज 1। तो इधर तो कुछ कन्वर्ट करने का इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट सोचो अगर इधर आपको 2 बताना है कंप्यूटर को तो आपको बाइनरी में कैसे इसको करना है। ये एक्चुअली 10 है, तो 102 क्यों है, तो एक्चुअली इसको फॉर्मूला कैसे करते हैं, ये 1 को आप 1 2 4 8 इसके जब भी बिट्स है पहले आप इसे पेपर पे लिख सकते हो, बिट इज 1 and 0। तो इसका जो बेस है, बेस क्या है 2 है ना, तो 2 भी लिख सकते हो। फिर जो बिट का पोजीशन है उसको पावर दे सकते हो इधर। तो ये बिट का पोजीशन 0 है, 2 पावर 0, और ये बिट का पोजीशन 1 है तो ये 2 पावर 1 हो गया। 2 पावर 1 मतलब इज इक्वल टू 2 एंड 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। फिर जो बाइनरी नंबर इधर लिखा गया है उसको उससे आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, और ये सेकेंड बिट इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो 2 है, 2 into 1 becomes 2, और ये जो 1 है 1 into 0 becomes 0। बाद में ये जो नंबर मिलता है आपको सब ऐड करके ऐड करना है। जो इसका एडिशन का रिजल्ट निकलेगा वो डेसिमल नंबर है। तो 2 + 0 is 2। तो इस हिसाब से 10 इज एक्चुअली 2।
अभी इन द सेम वे सोचो हमको 111 भेज रहा है कंप्यूटर, ये कौन सा नंबर है ये पता करना है, तो इसको फिर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 1 1 1। तो इसका बेस क्या है, हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेस कौन सा, ये सॉरी ये बाइनरी बेस है, ये बाइनरी नंबर तो बाइनरी बेस हो गया 2 2 2, पहले ऐसे लिख सकते हो। फिर इसको पावर देना है, ये बिट का पोजीशन, तो ये बिट का पोजीशन है 0 पोजीशन पे है, ये नंबर 1 पोजीशन पे है, ये नंबर 2 पोजीशन पे है। फिर इसको इसका वैल्यू आप लिख लो इधर, ये 4, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1 है। 2 पावर 0 इज 1। हाँ सही बात। तो बाद में आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1। तो इसका रिजल्ट आएगा इधर नीचे 4 2 और 1। फिर बाद में इसे सबको ऐड करना है। आप जब इसको ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो डेसिमल नंबर होगा, तो 4 + 2 6 7। ओके, तो दिस इज सो 111 इज इक्वल टू 7 एक्चुअली। तो इस तरह ये कन्वर्जेंस होते रहते हैं। तो अगर नंबर 65 आपको रिप्रेजेंट करना है तो मैंने बोला था कम से कम 8 बिट्स ना, तो 8 बिट से मैक्सिमम कितना होता है 1 2 3 4। ASCII चार्ट में कितने कैरेक्टर्स पॉसिबल है टोटल, 256 बोलते हैं ना हम, बराबर है ना? टोटल 256 कैरेक्टर सेट है ये। हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया गया है, उसको कोड पॉइंट बोल सकते हो या कैरेक्टर का नंबर बोल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कि 8 बिट्स लेता है, क्यों? तो देखते हैं 8 बिट्स का वैल्यू क्या है, 3 4 5 6 7 8। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कौन सा नंबर मिलेगा हमें? तो पहले तो हम बेस लिखेंगे सबका 2 2 2 2 2 2 और 2। फिर इसको पावर देंगे हम, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जाएंगे। ये हो गया 0, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। तो फिर इसका वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, 2 पावर 0 इज 1, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16, 2 पावर 5 is 32, and 2 power 6 is 64, and 2 power 7 is 128. अभी ये सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, तो वो देखते हैं। वन 2 8 प्लस 64 प्लस 32, सॉरी 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 255। मतलब आप अगर 8 बिट्स यूज़ करोगे कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए, आप 0 से तो चालू करोगे लेकिन आप मैक्सिमम किधर पहुंचोगे, 255 पे पहुंचोगे। तो मतलब इतने नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 8 बिट को यूज़ करके।
अगर आपने एक एक्स्ट्रा बिट इधर ऑल डाल दिया था तो और भी इसके आगे नंबर सेट बन जाता था, बट ये इतने बिट्स के साथ इतने ही नंबर गिना जा सकता है। तो ये जो बाइनरी, तो 8 बिट्स के साथ आप मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स, मतलब 0 इज ऑल्सो काउंटेड, सो दैट्स व्हाई इट इज 0 एंड 255, सो 256 कैरेक्टर्स आप नंबर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्मेट with maximum 8 बिट्स। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब ASCII चार्ट आपको डिस्प्ले करना है तो आपको नंबर बोलना पड़ेगा, कौन सा नंबर प्रिंट करना है। तो उसके लिए अगर 255 बोल रहे हो तो कम से कम 8 बिट्स तो बताना पड़ेगा कि वो नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए कम से कम 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो इसीलिए बोलते हैं अगर ASCII चार्ट के हिसाब से आप स्टोर करोगे किसी कैरेक्टर को तो आपको कम से कम 1 बाइट लगेगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है आपको अभी तक? नहीं, ये समझा। हाँ, यूनिकोड क्या होता है कि अभी ऑलरेडी इन्होंने इंग्लिश कैरेक्टर का तो नंबर दे दिया है। अभी मैं इसका देवनागरी प्रिंट करना चाहता हूँ, जैसे ओ हो गया, आ हो गया, क हो गया, का हो गया, या उर्दू का कोई शब्द है, या अरबी का शब्द है, या देवनागरी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कुछ भी कैरेक्टर, जर्मन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है। इनको जगह किधर दिया है कीबोर्ड में? ने जगह ही नहीं दिया है ना, डेटा भी समझ पाता है, सबको एक ही भाषा समझ में आता है, ASCII का भाषा समझ में आता है, तो बाकी का भाषा का क्या, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए यूनिकोड उन्हें क्या किया, एक नया स्टैंडर्ड आया जो अभी सब जानते हैं, जैसे डेटाबेस भी यूनिकोड पहचानता है, डेटा सेट। तो ये इसमें 16 बिट यूज होता है। तो 16 बिट मतलब 1 1 1 1 5 6 7, कितना हो गया, 7 8, तो 8, तो टोटल 16 बिट मतलब इसका डबल। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, डेसिमल नंबर, बराबर है। इतना कैरेक्टर सेट, इतना बड़ा कैरेक्टर सेट आप कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा नंबर है 16 बिट। तो इससे 165 लैंग्वेजेस फिट हो सकता है। अब हर एक भाषा के हर एक कैरेक्टर को नंबर दिया जा सकता है। तो अगर वो चार्ट, अगर आप, तो वही चार्ट मैंने थोड़े टाइम पहला बताया था, किधर है चार्ट, तो ये चार्ट, तो इधर बोल रहा हूँ मैं, जैसे 0970 एक्चुअली हेक्साडेसिमल है, क्योंकि वो बड़ा नंबर है ना, इसीलिए बिट्स में तो नहीं, 16 बिट्स में ऐसे बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए वो बोलता है कि 097A ये, लेकिन क्या है, ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट करना है तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको बाइनरी में। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसको एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट लेते, तो ये हो गया 0। फिर नंबर 9 इज 101 ना, 2 पावर 2 नहीं, 1001, 2 पावर 3 इज 8, सो 8 प्लस 1, ये 9 हो गया। फिर 7 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 0101 हो गया क्या, नहीं 7011 है। और A इज नंबर 10 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 8 भी 2 पावर 3 8 एंड 2 पावर 2, इसको ऐड करोगे तो नंबर 10 मिलेगा। तो इसका ये जो 16 बिट्स है, इसका जो इक्विवेलेंट है ये है 0000100101111010 इस कैरेक्टर नंबर 097A, जो कौन सा कैरेक्टर है यूनिकोड में वो कैरेक्टर है 0971 इज, ये जो भी दिख रहा है आपको, ये जो भी कैरेक्टर है वो है बेसिकली। तो वो कैरेक्टर प्रिंट होता है। तो अगर मैंने क्या है कि अभी कंप्यूटर पे तो अभी हम ऐसे वो कैरेक्टर टाइप नहीं कर सकते क्योंकि सब अंग्रेजी के कैरेक्टर है। तो इसको ये कैरेक्टर अगर टाइप करना है तो मैं 097 लिखता हूँ, पहचान सकता है क्या। ऑल टेक्स्ट अगर मैं अभी प्रेस करूँगा तो वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 097B टाइप करता हूँ और ऑल टेक्स्ट लिखता हूँ तो दूसरा कोई कैरेक्टर है क्या, ड लेते हैं 0921। तो 0921 ऑल टेक्स्ट कौन सा कैरेक्टर देगा? अच्छा, ये प्रिंट नहीं करता है। ये प्रिंट क्यों नहीं करता है पेंट ब्रश? क्योंकि पेंट ब्रश को अभी
यूनिकोड चार्ट समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो प्रिंट नहीं कर पा रहा है वो कैरेक्टर को। एक्चुअली वो कंप्यूटर उसको ठीक से बता तो रहा है लेकिन वो प्रिंट नहीं कर पाता। लेकिन ये मेरा जो वर्ड का अभी जो सॉफ्टवेयर है, अगर मैं इधर 0 to 9 to 1 ऑल टेक्स्ट करूँगा, ये प्रिंट कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को यूनिकोड आता है और पेन ब्रश को यूनिकोड नहीं आता है। तो इन द सेम वे अगर आप पुराना डेटाबेस यूज़ करोगे तो उसको शायद ऐसा हो सकता है उसको यूनिकोड ना आए। आप उसको इतना कैरेक्टर भेज रहे हो लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। वो सब चीज़ को 8-8 बिट्स में टुकड़ों में समझ में आता है। तो वो सोचेगा ये एक कैरेक्टर भेजा है आपने, ये एक कैरेक्टर भेजा है, 2 ASCII कैरेक्टर भेजा है। अगर वो ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो आप यूनिकोड में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो बोलेगा अच्छा ये कैरेक्टर भेज रहे हो पूरा के पूरे 16 बिट वाले। तो जो भी उसका यूनिकोड कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। अभी समझा कुछ भी कि अभी भी मतलब अभी कंफ्यूजन कम हो गया कि कैसे? हाँ, अब समझ में आया। ओके, तो मुझे हाँ, मुझे आप समझाओ कि क्या समझा आपको, यूनिकोड और ASCII में क्या फ़र्क है? ASCII में 8 बिट्स जाते हैं, यूनिकोड में 16 बिट्स जाते हैं। जैसे कि अभी अपने कीबोर्ड पे A to Z रहते हैं, 0 to 9 रहते हैं। लेकिन अभी हमको कुछ और टाइप करना, कंप्यूटर को इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझते, वो बाइनरी नंबर समझता है। तो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। हम लोग टाइप तो 8 रहते हैं लेकिन कंप्यूटर उसको 0 और 1 के बिट में कन्वर्ट करता है। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 था, 2 के लिए 1 0 था, मीन्स 1 to 4 8 का सब बेस केस से उसको डिवाइड किए थे। और यूनिकोड में अब अपन को कीबोर्ड पे इंग्लिश में 1 A to Z दिख रहे हैं, लेकिन अभी हमको कुछ दूसरी लैंग्वेज का लिखने का है तो वो कंप्यूटर को कैसे समझेगा? तो उस वक्त हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर यूज करते हैं। जैसे पेंट में आपने बताया, वो क्या बोलते हैं, यूनिकोड नहीं समझते, वो 8 बिट्स लेके वैसा करेगा। लेकिन जो हमारा वर्ड है, वर्ड को बराबर समझते, वो एक साथ लेगा और इसको कन्वर्ट करके शो करेगा। साइली, आप डिड यू अंडरस्टैंड यूनिकोड ASCII में? मुझे अभी भी एक डाउट है, आपने यूनिकोड किसके लिए लिखे? तो हेक्साडेसिमल स्टार्टिंग में 0x लिखे थे वाले पे नोटपैड पे। तो हाँ, ये 0x097 है। हाँ, ये क्या है? तो 0x कैसे समझ में आएगा वो क्या है? सिर्फ 097 लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, हम 09 क्या कि प्रोग्रामिंग में ना कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि हम ये नंबर भेज रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो ऐसे हम बताते हैं उसको कंप्यूटर को। या कोई भी लैंग्वेज में अगर आप सोचो एक असाइन करते हो int a इज इक्वल टू 0, बराबर है। अगर आपने बोल दिया 097 ऐसे, तो ये नंबर 97 असाइन होएगा। लेकिन अगर आप int a इज इक्वल टू 0x097 बोलते हो तो दिस नंबर इज नॉट 97, इसका कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डेसिमल में। इसका नंबर कुछ और ही हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल सबसे सिंपल तो मैं फॉर एग्जांपल 10 लेता हूँ। इंट अगर a इज इक्वल टू 10 बोलता हूँ तो इसका वैल्यू 10 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंट a इज इक्वल टू 0xb बोलता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू क्या आएगा फिर सेकेंड केस में? b इज व्हाट? b इज 11 ना। तो एक्चुअली a इज 11 इन दिस केस। तो ये एक इंडिकेटर है, मतलब मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ, ये नंबर डेसिमल नहीं है, ये हेक्साडेसिमल है। तो समझे? तो ये खाली एक इंडिकेटर है। स्टोर तो बिट्स ही हो रहे हैं, अंडरलाइन उसको कन्वर्ट करके आप बिट्स ही स्टोर कर रहे हो। ये नंबर तो स्टोर नहीं हो रहा है, सब चीज़ को कन्वर्ट करके बिट्स में ही स्टोर होता है। चाहे आप ये डेसिमल 10 भेजो या हेक्साडेसिमल 11 भेजो, कैसा भी आप लिख के भेजो, अगर आपने हेक्साडेसिमल वैल्यू ऐसा टाइप करके भेजा है तो उसको समझेगा ये हेक्साडेसिमल है, वो कन्वर्जन करके उस नंबर को स्टोर करेगा, ठीक है। अगर आप ये बोलते हो कि a इज इक्वल टू 0xa प्लस 0xb, इसका रिजल्ट क्या है मुझे बोलो? 10 प्लस 11। वेरी गुड। तो ये एक्चुअली 21 है। तो ये चीज़ सब चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स के साथ
जूझ रहे हैं, मतलब इतने बड़े नंबर्स के साथ, इतने कंप्यूटर्स है, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है, तो इसको कैसे छोटे फॉर्मेट में बताया जाए, तो हेक्साडेसिमल हम लोग फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, मतलब एक समझने के लिए। हम ऐसा बड़ा बड़ा नंबर्स तो रीड नहीं कर सकते ना। अभी मैंने ऐसा ऐसा टाइप किया, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको कैसे समझेंगे क्या नंबर है, तो आप इसको हेक्साडेसिमल में छोड़ कर तो छोटा हो जाएगा। जैसे अभी कैरेक्टर ए 2 डिजिट को लेके 1 डिजिट हो गया, मैंने 1 कैरेक्टर हो गया, तो एक ही कैरेक्टर में आप नंबर 11 बता सकते हो, तो वैसे। ओके, हाँ, वेलकम। साइली, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, प्राजक्ता, आपको समझ में आया? यस सर, अंडरस्टूड। ओके, सो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज डेटाबेस, यू नीड टू database, whenever you run this command create database, it will use a default, उसका खुद का एक default, if you run this command create database, something like my db, this database you have to make sure that you have to tell what is the encoding scheme, character encoding scheme that you're going to use. By default it is going to use UTF-8 because UTF-8 is covering 165 languages and everything, so it will use some UTF-8 Unicode scheme, because unless you say it is ASCII, if you can also say it is ASCII, like you can say do something like this, you say this database will store only ASCII characters. And what is the advantage of telling the database it is ASCII? Because ASCII is going to use only 8 bits to store one character, but UTF-8 database size will increase because it is using 16 bits to store every character. So the database by default it will have its own character encoding. So that is what we have to remember. And yeah, so once now that you have understood this, we'll understand few data types. So in a database, tell me what is the difference between char and varchar. If I say char is equal to just let's say char is equal to 5 and varchar is equal to 5. What are we trying to say? What is char 5? Just let's talk about char 5. What are we trying to say? If this field is char 5 means how many characters it will take, how many bytes, how many characters it can store, how many 5 characters. Okay, so let's say 5 characters, and if 5 characters is stored in ASCII format, how many bits it will take? Let's say this 5 characters stored in ASCII format means how many bits it will take, or how many bytes? One character is equal to 8 bits is equal to 1 byte. Eight bits is equal to 1 byte. 40. No? Yes, it will take 40 bits or it will take 5 bytes. You can either say this is 5 bytes or you can say it is 40 bits. That is your data size over here. Now the thing is, the character A can understand only ASCII. It cannot understand Unicode. If you say the character, the field type is nchar5, this fellow, the difference between this and this is this fellow understands Unicode. So if I am saying this is 5 characters, how many bytes are we actually using to store 5 characters? What is answer? 2 bits रहते हैं ना? हाँ, एक कैरेक्टर कितना लेता है यूनिकोड में?
16 बिट्स, और 16 बिट्स मतलब 2 बाइट लेता है एक एक कैरेक्टर। तो अगर 5 कैरेक्टर है तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हो गया 5 इंटू 2, मतलब 10 बाइट्स। ये ज़्यादा साइज लेगा। इधर आप एक कैरेक्टर स्टोर करोगे तो एक ही बाइट लेगा, लेकिन इधर आप स्टोर करोगे एक बाइट को, वो 2 बाइट ले लेगा। तो ये 5 बताता है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर बचाता है, कितनी कैरेक्टर्स है, और ये भी नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है, ये नंबर ऑफ बाइट्स नहीं बोलता है। इधर 5 इज इक्वल टू 5 मैच होता है कि 5 कैरेक्टर है तो 5 बाइट है, लेकिन इधर 5 कैरेक्टर इज इक्वल टू 10 बाइट्स। तो ये फ़र्क है कैर और एन कैर में। क्योंकि अगर आपको यूनिकोड सपोर्ट चाहिए, एक देवनागरी का कैरेक्टर स्टोर करना है डेटाबेस में, तो आप कैर के साथ नहीं जा सकते, आपको एन वेर कैर के साथ जाना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आप बहुत बड़ा स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो एन वेर कैर यूज़ करना पड़ेगा, वेर कैर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वेर कैर इज़ एक्चुअली वेरिएबल कैरेक्टर, मतलब अगर आपने एक कैरेक्टर स्टोर किया है तो वो उतना ही बाइट्स लेगा, अगर 2 किया है तो 2 कैरेक्टर का लेंथ बाइट स्टोर करेगा। इसमें आप कैरेक्टर चाहे ए डालो तो कैर और वेर कैर में वो फ़र्क है। तो कैर और वेर कैर में मतलब इधर अगर आपने 5 बोला है तो इधर भी 5 बाइट्स ही जाएंगे, बट अगर आपने वेर कैर 5 बोला तो वो 5 बाइट स्टोर नहीं करेगा। अगर इट डिपेंड्स ऑन हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग में कितना है, अगर सिर्फ ए भेजा है तो इसके लिए तो 8 बिट्स काफ़ी है, तो ये दिस विल टेक ओनली 1 बाइट। आपने स्ट्रिंग में ए बी डाला है, दिस विल टेक ASCII फॉर्मेट में ये हो गया 2 बाइट इधर। तो स्टोरेज साइज वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ योर डेटा साइज। बट अगर आपने कैर 5 यूज़ किया है तो वो फिक्स्ड लेंथ है, मतलब वो पूरा का पूरा, चाहे आप एक कैरेक्टर भेज रहे हो, इधर आपने ए भेजा फिर भी वो 5 बाइट लेगा, और अगर आपने ए बी भेजा तभी भी वो 5 बाइट्स लेगा। Any question on this? So tell me what is the difference between char, varchar, nchar and nvarchar? ये सब में डेटा साइज का कुछ फर्क है, तो क्या फर्क है प्राजक्ता? Sir, char data type it's taking means all spaces means It's a fixed length data size. Fixed length. Fixed length size, and varchar is not fixed length means it we can use varchar to save the space means storage. Very good. Instead of char. Yes. And if we want to means it is a Unicode means if you want to add Devanagari and other in char. Yeah, but nchar 1 will take how many bytes? Means it will take all fixed length. No, Yeah, it is fixed length. So what will be that fixed length? What is how much data bytes will this will take nchar to? 2 bytes. Yeah. 2 bytes is 1 character. This number, yeah, this is like total number of characters. Yes. All 4 bytes. Okay. Correct. So total number of character. So total number of characters into each the data size, each character. So which this is not 2 bytes. This is 4 bytes. 4 bytes. Yes. And because it is 2 bytes, it can support Unicode characters. And nvarchar has the same definition. It is a variable length Unicode character field. So if you type this command show character set in your database like MySQL, that's why I said you have to install MySQL, and so this is a workbench. Slowly we are getting inside the database now. Open. So make sure this software is there on your box.
see this. So in the interview, if they ask you anytime on data type, data size, data encoding, you should understand. Okay, show character set. Let me close this application. It is not starting. Okay, from here it is starting. Is it starting? Oh, yeah, it is started. Okay, so I'm starting my database for you. So I'll press this plus sign, which means a new query page. So this is like one page. I can try any page. So what is the command I said? Show character set. So let's see, semicolon, and then I press this flash button to run the query. So you see there are if you can say which character set the database should support. If you say US ASCII means ASCII over here. So you can tune your database for a particular language. If I want Arabic, then I will say use this character set CP1256, which means Windows Arabic. If I want Hebrew, European, every language is there. So you buy. So the advantage is, the thing is, we don't want to support all the 165 languages in the database. We can create two databases. One database will have one language, another database can have another language. One database can have a Devanagari encoding, another database can have some like Arabic encoding. So the encodings can be set for the database based on this value. So you can there has to be some command to do that. Now that this thing is, what is this now? Default collation. It's a CI. So CI actually CI means case insensitive, or if it is CS, it means it is case sensitive. So if I say the character A, is it equal to A, tell me what will be the answer. Is, if I say select star from let me see, table call outcome. Okay, so how do I start? I say use so these are all MySQL commands. So slowly we are getting there, so make sure you start practicing. So use my first database, select star from call underscore outcome, where will this recognize A is equal to A. Is this true or false? Tell me. Anyone? The value of this will be equal if the collation that is set on the database is CI, case insensitive, which means for a database, if you have said a database is configured as UTF-16 encoding plus UTF-16 underscore general underscore CI collation. One is the character encoding, second is the collation. What you are trying to tell the database, that you create a database, this is your character set, and this is how you are going to compare. If I say CI, which means A is same as A, even though the ASCII value is different, the Unicode value underlying number is different, because this A is 97 and this A is 65. Underlying, the computer will try to compare 97 equal to 65, which will be false, and this will turn false if this was case sensitive.
If you said this is a when collation is CS format, which means case sensitive, then this will return false. So let's see whether this query will work or not. First of all, I'm not sure. I'm trying for the first time. Okay, so I got 3 records, and how many records are there in the database actually? Select star from call underscore outcome. Count of star will give me total records. If I say as total, means I'm naming the field. So let's say I'm just running this query. So there are total 3 rows, and actually I got 3 rows only. So let me just comment this and let me run the query again. So I got all the 3 rows. It said A is equal to A. Why? What type of collation is used over here? CI or CS? It has written true, right? So which means it is case insensitive, and that's why CI collation was used. Any confusion? So this is a query, right? Oh yeah. Hello. Hello. Saili? Hello. Yeah. Saili, bolo. Sir, this collation term is new for me. Will you please explain? Sir, collation term is new for me. Will you please explain again? हाँ, कोलेशन क्या किस लिए यूज होता है ना, कंपैरिजन करने के लिए कि इज 1 इक्वल टू 1, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, नंबर में जानता है, वो टेक्स्ट तो नहीं जानता है ना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आता है, उसको नंबर समझ में आता है। तो आप जब a इज इक्वल टू a बोलते हो तो उसको वो कन्वर्ट करता है नंबर में। छोटा a कितना, कौन सा नंबर है? नंबर 97 है ASCII कोड के हिसाब से। और बड़ा a कौन सा नंबर है ASCII कोड के हिसाब से? नंबर 65। हमने ASCII चार्ट देखा था ना थोड़ा टाइम पहले। अब नंबर वो देख, हाँ, तो वो आप 65 बराबर है। तो ये अभी आप देखोगे इधर नंबर 65 ढूंढोगे तो नंबर 65 कैपिटल है, और छोटा a का नंबर क्या है? इधर छोटा a नंबर है राइट हैंड साइड पे, इधर वो नंबर 97 है। तो E60 वो कंप्यूटर क्या करता है एक्चुअली, E65 इक्वल टू 97 ये कंपेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक गेट यूज़ करके, बाइनरी नंबर्स यूज़ करके वो कंपेयर करने को देखते हैं ये 65 नंबर और 97 एक ही है क्या। आइडियल सिचुएशन में तो गलत सेम नहीं रहेंगे ना, लेकिन हमको क्या है कि ये हमको डेटाबेस को ये छोटा है बड़ा है कैसा नहीं ये करना है। हमारे लिए छोटा केस लेटर्स में आपने साइली लिखा है, या बड़ा केस में जैसे आपने इधर जैसे आपने छोटा केस में लिखा साइली सोचो, और बड़ा केस में इधर साइली लिखा है। डेटाबेस के वर्ल्ड में ये नाम है एक्चुअली, हम कैरेक्टर से नहीं ये करते हैं ना, तो इसका ये एक्चुअली सेम होना चाहिए। तो ये वैल्यू अगर ये रोज रिटर्न करता है सबके सब, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया है ना। अगर मैं ये कंडीशन साइली इज इक्वल टू क्या सैरा, ये तो डेफिनेटली अगर ये कैपिटल भी होगा और इनसेंसिटिव भी होगा तो अनइक्वल है बेसिकली। तो ये रोज लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा, 0 रोज लेके आया क्योंकि ये अनइक्वल था। लेकिन ये कैपिटल जो कैरेक्टर होते हैं ये कंपैरिजन, कोलेशन इज इक्वल टू कंपैरिजन, ऐसे आप याद रख सकते हो। कोलेशन मीन्स कंपैरिजन, मतलब आप स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हो, नंबर कंपेयर कर रहे हो। तो कैसे, तो डेटाबेस को अगर आपको उसको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना है कि बोलना है कि अगर मैं ऐसे छोटा कैरेक्टर छोटा केस में साइली को भेजूँ और बड़ा केस में साइली को भेजूँ, ये उनका नंबर अलग हो सकता है लेकिन ये सेम है। तो वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली ये मैनेज कर लेगा आपके लिए, क्योंकि आपने इसका कोलेशन बताया है ये UTF-8 यूनिकोड CI या जो भी है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अगर आपको अभी कैरेक्टर सेट चेंज करना है तो आप इधर चेंज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि कैरेक्टर सेट कौन से है। तो ये यूनिकोड के जो आपको यूनिकोड कोलेशन बदलना है तो इधर आप कोलेशन भी बदल सकते हो ऐसे करके। आपको कोलेशन का में कुछ डाउट है? कोलेशन समझा आपको क्या है?
कोलेशन सिर्फ कंपेयर करने के लिए है कि तो मुझे बोलो ये क्या कर रहा है ये कमांड ऑल्टर टेबल कॉल आउटकम कन्वर्ट टू कैरेक्टर सेट UTF-8 कोलेट UTF-8 यूनिकोड CI ये कमांड क्या करता है? सोचो मैं इसको बदल देता हूँ CS बना दे, अभी मैं केस सेंसिटिव बना देता हूँ। अभी तो ये सब रोज भेज रहा था ना अभी, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव है। सोचो मैं अभी जानबूझ के इसको सेंसिटिव बनाता हूँ तो क्या करेंगे? तो इसको पहले मैं ऑल्टर कर देता हूँ टेबल को। तो ये ऑल्टर हो गया क्या? अच्छा ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो पहले वो नाम देखना पड़ेगा। शो क्या कैरेक्टर सेट ना, ओके UTF-8 है क्या कुछ? CS अच्छा ये नहीं है CS का कोई भी, सब CI है। नहीं अच्छा CS सपोर्ट नहीं करता है इस केस में, तो शायद आपको कुछ वो इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कुछ, तभी जाके वो CS भी सपोर्ट करेगा। है नहीं कैरेक्टर सेट, इसको निकाल कैसे? ये क्या करेगा ये कमांड, मुझे समझाओ सही। ये कैरेक्टर सेट को UTF-8 में कन्वर्ट करेगा। मतलब यूनिकोड वो अभी जो हमने समझाया है 16 बिट वाला, फिर कोलेट का मैंने शब्द लिखा है, उसके बाद मैंने वो नाम लिखा है, तो वो क्या करेगा? यस ये लास्ट पार्ट क्या करता है कमांड को? वो UTF-8 को और UTF-8 यूनिकोड CS को कंपेयर करेगा। मतलब आप जब UTF यूनिकोड के कैरेक्टर सेट को कंपेयर करते हो तो वो केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन करेगा, केस सेंसिटिव कंपैरिजन। जब आप UTF-8 के कैरेक्टर सेट को कंपेयर करते हो कोई भी स्ट्रिंग को या कोई भी नंबर को, तो वो हमेशा ध्यान में रखेगा कि कंपैरिजन केस सेंसिटिव कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब छोटा a इज नॉट इक्वल टू बड़ा है। छोटा शैली को अगर स्मॉल केसेस में लिखते हो ये फॉल्स आएगा, ये अगर फॉल्स वैल्यू देगा तो रोज आएंगे नहीं ऐसे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर सेट और हमारा कोलेशन CI फॉर्मेट में है, इसीलिए ये इक्वल आता है। बट कंप्यूटर को पता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड शैली में और राइट हैंड साइड शैली में फ़र्क है, क्योंकि दोनों का नंबर अलग है। ये शैली में जो S है इसका नंबर 97 है, ये छोटा a है जो उसका नंबर 97 है, और जो बड़ा a है इधर इसका नंबर 65 है। 97 is actually not equal to 65, but because you have said this is case sensitive, is insensitive, सब case insensitive ही है by default, तो इसीलिए वो कंपेयर कर सकता है। मतलब डेटाबेस थोड़ा इंटेलिजेंट है। Even though 97 is not equal to 65, it knows that in the text world 97 is equal to 65, दो नंबर वर्ल्ड में इक्वल नहीं है। बात समझ में आई? सही? हेलो Prajakta, you have understood? Yes sir, please. Okay, so with every database में एक not only table is defined, not only fields are defined, you have to tell what is the character encoding you are using, what is the collation you are using, because you are not dealing only with English language anymore. You are not only dealing with ASCII format anymore. You may be dealing with Unicode format. You may be dealing with some different language. How will we know? How will computer know is equal to d or d is not equal to ये कैसे समझेगा? We compare the numerical value as per the Unicode chart or ASCII chart and compare. If you have said that this is case insensitive, then it will know that some
numerical values maybe some characters may have different numerical values, but they still mean the same thing in the text world. So I think so this, as I told you, UTF-8, if it is a numerical value starts from 00 to 7F, it will just use 8 bits, as I told you, right? Number character A will just take A. If it is some Chinese character which is like between if it is like 900, it will come in this. So the Chinese character will take 3 bytes. So so it is a how much length will each data take, depending in the Unicode UTF database, will depending on which character you are using. If you are using any character which is within the ASCII chart, it will just use 1 byte intelligently. If you are using Chinese character, then it requires a bigger number to represent it, so it will definitely require more bytes. So and this 4 bytes is usually used for in your Unicode character set. There are even emojis. I think you all know what emoji is, right? A smiley and everything. Those character also can be printed, but those character they require 4 bytes to be printed. So if you want to store emojis in your database, also you can store, but it will take 4 bytes for each emoji. So here you see text. If you define a field as text, so you can store a 2 GB data in text field. Where already we discussed char and where so now you know what is Unicode string variable means. What is binary mean? Binary means pure zeros and ones, and it can store 8000 bytes means 8000 into 8, 64,000 bits. Where binary maximum 2 GB. Image maximum, you can have an image field which will store 2 GB binary bits. So your data size is differing based on what is the maximum size you can store in one field. Also it differs. Okay, so so a small bit will take only it says 0, 1 or null, right? And tiny int will take 1 byte, small int will take 2 bytes. Integer means positive, tiny int means 0 to 255 number. Small int means minus 22,768 to this many numbers only can be stored in this field, small int. If you say the field is int type, then you can store this many number, minus 214, whatever big number that is. Big int means very big numbers also you can store, but it has to be big int. But big int also means each number will take 8 bytes. If it is tiny int means one number will take 1 byte. Small money, this all. Float means decimal numbers can be stored in the database. So 1.234 something like that. So date time field will take how many bytes? 8 bytes over here. That is what it says here. Small date time will take 4 bytes over here. So depending on your requirement, you have to define the data fields accordingly, because if you don't require a bigger data size, define that type of field. If you need a bigger data size, you have a bigger number, or you have a bigger text, or just like an image or something, you choose a right type of field. These other things, so I have already spoken about blob, so binary large objects. So there is a small, the normal blob can store 64 kilobytes, medium blob will take 16 megabytes, and long blob can store 4 GB in one field itself. So with that, I think I want to wrap for today.